शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 12 का 4th लेक्चर बनाते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट लेते हैं। फ्रेडमैन्स एफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्नेडिकोर्स एफ स्टूडेंट्स टी chi square एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो फ्रेडमैन एफ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है काई स्क्वायर की बेस पर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर फ्रेडमैन्स एफ डिस्ट्रीब्यूटेड एज काई स्क्वायर बेस्ड ऑन के ट्रीटमेंट्स एंड और ब्लॉक्स आर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास k-1 के बराबर होती है इस केस में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्शन फैक्टर C फॉर टाइड ऑब्जर्वेशंस इन फ्रेडमैन्स F with usual notations is the correction factor C for tied observations and Friedman F test with usual notation is this one. B option, C is equal to 1 minus summation I raised from 1 up to R Ti divided by Rk into k square minus 1. The option B is the correct option, okay. Question number 57, the quantity Ti in the formula for correction for ties C with usual notations is the quantity T in the formula for the correction of for ties C correction with usual notation is this one. Option number C, that is both A and B, because if you look at this summation Ti cube minus summation Ti, this is same to this one summation into Ti square minus Ti. Just the difference is the summation symbol which is applied in this case, while in this case we didn't multiply it, okay. So both are the same. Question number 58, the critical difference for multiple comparisons in Friedman's test with usual notations is the critical difference, okay. This is equal to Z into Rk into k plus 1 divided by 6 under the root. ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, in an experiment with 4 treatments and 5 blocks, the sum of the ranks for treatments were 12, 15, 6, 17. Friedman's F based on the given data is equal to what? Is equal to 8.28. इसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है क्योंकि मैंने नहीं देखा था इस क्वेश्चन को कि इसमें सोल्यूशन की ज़रूरत है, इसलिए ये रह गया है अभी। लेकिन अगर ज़रूरत हो किसी को तो वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, द जोंकरी-टर्पस्ट्रा test for equality of k treatments mean is applicable when the alternative hypothesis is what is added in respect of treatment means, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, Page's test for equality of k treatments mean is applicable when the alternative hypothesis is what is ordered, यानी ऑप्शन बी, this is the correct option, okay. Question number 62, with k treatments in Rj, the rank total for j treatment in a two-way classification, the Page's test statistic L is this option. Option A, summation j rise from 1 up to k j r j. This is the correct formula, okay. Question number 63, when number of treatments k is large, that is k is greater than 8, the Page's statistic L is distributed as normal variates with mean what? With mean Rk
into k plus 1 whole square divided by 4. And option D is the correct option. Okay. Question number 64. यहाँ ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 63 का, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये दोनों सेम लगे हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये दोनों करेक्ट हो गई। हो सकता है इसमें कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन प्रिंटिंग वालों से गलती सी मतलब एक जैसा लगा हुआ हो ऑप्शन सी और डी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी और डी जो है ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64. In case of large number of treatments k, that is k is greater than 8, page statistic L is distributed normally with variance. This was the mean, and variance is equal to option B, r into k cube minus k whole square divided by 144 into k minus 1. तो फिर वेरिएंस जो है वो इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65. Rank correlation was given by C.E. Spearman. ओके, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, आपने नाम भी सुना होगा, इसको हम कहते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, तो ये C.E. स्पीयरमैन ने जो है ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 66. रैंक कोरिलेशन वाज इन्वेंटेड इन द ईयर व्हाट? इन द ईयर नन ऑफ दीज, बिकॉज देयर इज नो द करेक्ट ऑप्शन इन दीज। ओके, so D option is the correct option. Question number 67. Formula for rank correlation between two sets of ranks with usual notation is. इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है? इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, RS is equal to 1 minus 6 summation IDI square divided by n into n square minus 1. ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68. द रेंज ऑफ RS इज फ्रॉम -1 to +1. कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो हमारे पास रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक है। ठीक है। 69. If RS is equal to +1 means that the ranks awarded by two judges are same. There is perfect association between the ranks awarded by two judges. All differences DIs are 0. ऑप्शन डी इज all the above. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, all the above. क्यों? जब R की वैल्यू +1 हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास परफेक्ट एसोसिएशन है बिटवीन द रैंक्स। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। अब ऑप्शन एम कहते हैं द रैंक्स अवॉर्डेड बाय टू जजेस आर सेम, तो ये भी करेक्ट हो गया ना, क्योंकि जब हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, इस दोनों में बिल्कुल सेम एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये भी इसी वजह से करेक्ट हो गया। और सिम कहते हैं ऑल डिफरेंसेस यानी डी आईज आर 0, तो डी आई जो है वो 0 के बराबर होंगे। जब यहाँ हमारे पास कोरिलेशन जो है परफेक्ट हो तो फिर ऑल डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर होंगे, तो इसलिए हमारे पास सी, बी और ए ऑप्शन तीनों ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70. If RS is equal to 0, it shows no rank correlation between the ranks of two sets. तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। The ranks of two sets are independent. ये भी करेक्ट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जब 0 के बराबर हो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 हो। ठीक है। और समेशन 6 समेशन डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है। जब ये 0 के बराबर हो आर स्क्वायर तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगी। ठीक है। यहाँ हमारे पास जो ये फार्मूला था ये हमारे पास 1 के बराबर होगी, ये 1 के बराबर होगी तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो आर एस की वैल्यू जो है वो 0 आएगी ना, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71. When there are only two individuals ranked by two judges, then the possible values of rank correlation RS are what? The possible values are from -1 to +1. क्वेश्चन में रेंज की बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के लिखा है।
When there are only two individual ranked by the two judges, then the possible values of rank correlation. तो possible value जो है मतलब उसका रेंज है, तो रेंज जो है वो हमारे पास -1 से लेकर +1 तक है. क्वेश्चन नंबर 72. When there are 3 items ranked by 2 investigators, the only possible values of rank correlation are what? The only possible values of the rank correlations are -1, -1/2, +1/2 एंड +1. मतलब ये कि हमारे पास रैंक कोरिलेशन के जो वैल्यूज़ है या तो -1 आएंगी या +1 आएगा या 1/2 प्लस आएगा या 1/2 माइनस आएगा. ठीक है. when there are 3 items ranked by 2 investigators. ठीक है. जब आइटम्स 3 हो और 2 इन्वेस्टिगेटर इसको रैंक करते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है आर एस की वैल्यू वो हमारे पास -1 या +1 हो सकती है या -1/2 या +1/2 हो सकती है. ठीक है. तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73. This one. If there are 3 items and number of judges is 2, then the probabilities of occurrence of the values of RS is -1, -1/2, 1/2 and 1 are respectively. अच्छा, वैल्यूज तो ये आएंगे जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में भी बताया है, लेकिन इसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ मतलब इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी असाइन होती है वो क्या होगी. तो इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो ये होगी ऑप्शन बी वाली, यानी -1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और +1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है. इसी तरह -1/2 और +1/2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है. ठीक है. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 74. When the rank correlation between two sets of ranks awarded by 2 judges is -1, then it leads to the conclusions that what? ऑप्शन में है देयर इज कंप्लीट डिसएसोसिएशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ 2 सेट्स. ठीक है. बी ऑप्शन में है द रैंक्स अवॉर्डेड बाय 1 जज आर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द रैंक्स अवॉर्डेड बाय द अदर जज. ऑप्शन सी में है 3 समेशन di² = n × n² - 1. तो ये 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है और डी ऑप्शन में है ऑल द अबव. तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो गया इसलिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 75. इफ द टाइड वैल्यूज अगर इन x वेरिएबल्स एज वेल एज इन y वेरिएबल, देन द फार्मूला फॉर RS इनकॉर्पोरेटिंग द करेक्शन फॉर टाइज विद यूजुअल नोटेशन इज. तो हमारे पास फार्मूले की बात हो रही है. तो फार्मूला जो है हमारे पास करेक्ट फार्मूला वो है ऑप्शन सी वाला, ∑xj² + ∑yi² - ∑di² डिवाइड बाई 2 इंटू ∑xi² ∑yi². ठीक है. क्वेश्चन नंबर 76. द सिग्निफिकेंस ऑफ रैंक कोरिलेशन कैन बी टेस्टेड बाई व्हाट? कैन बी टेस्टेड बाई टी टेस्ट. ऑप्शन बी में हमारे पास है टी टेस्ट. ये टी टेस्ट के थ्रू जो है ये हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 77. द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ RS इज. हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो टी यूज़ हो रहा है विद दिस फार्मूला RS × n-2 अंडर द रूट डिवाइड बाई 1 - RS² अंडर द रूट. ओके. क्वेश्चन नंबर 78. Exact frequency distribution of RS was derived by what? Was derived by mg Kendall. Option B is the correct option. Question number 79. If S is the total number of pairs in the rearranged second set that are in natural order minus the number of pairs that are in the unnatural order in a set of n rankings, the formula for Kendall's rank correlation is what? Formula is ta = actual value divided by maximum possible value. ऑप्शन बी में है ta = s divided by n choose 2. ऑप्शन सी में है ta = 2s divided by n × n-1. All the above 3 options are correct. और ऑप्शन डी में है all the above. So D is correct option. Question number 80.
द रेंज ऑफ किंडल्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट था इज, इसका रेंज जो है वो -1 से लेकर +1 तक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, Kendall's rank correlation tie is equal to 1 can be interpreted as what? As a perfect correspondence between the rankings by the two judges. ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82, if Kendall's rank correlation coefficient tau is equal to 0, it means that option B को देखिए, for the natural order of ranks of one set, all possible order of ranks in the other set are all equally likely. This option is correct. Okay. Question number 83, if Kendall's rank correlation coefficient tau is equal to -1, then its physical interpretation can be given as the ranks in one set are in reverse order of the other set। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, if tx and ty are the number of tied observations in the set x and y out of n pairs respectively, tx is equal to tx into tx minus 1 by 2 and ty is equal to ty into ty minus 1 by 2. The formula for Kendall's tau adjusted for ties is what? Is this one, option B, s divided by under the root n minus n into n minus 1 by 2 minus tx into अंडर द रूट n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस टी वाई। ठीक है, ये tx जो है ये इस अंडर रूट में है, फिर हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, फिर हमारे पास टी वाई जो है ये इस अंडर रूट में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, if there are only two individual items that have been ranked by two judges, then Kendall's tau can have only values what? Only values from -1 to +1। तो ये तो हमने पहले भी बताया कि कैंडल का रेंज जो है वो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तरह है, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, if n is equal to 3 then Kendall's tau can have the only values as। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 हो कैंडल्स टी टेस्ट के था टेस्ट के लिए, तो फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो भी उसी तरह आ सकती है जैसे कि हमने पहले बताया कोरिलेशन के लिए। ठीक है, -1 और +1, वो -1/3 और सॉरी वहाँ 1/2 थी और यहाँ 1/3 है, बस जस्ट ये डिफरेंस है। ठीक है, -1/3 और +1/3। क्वेश्चन नंबर 87, if n is equal to 3 the probability of occurrence of the values। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 हो और ये वैल्यूज़ आ सकते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास होने चाहिए 1/6, 1/3, 1/3 एंड 1/6, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, द अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन tau एंड rs इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है और ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। tau इज इक्वल टू 2/3 rs, तो ये करेक्ट है। ठीक है डियर्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।